Hi everyone, thank you so much for watching. I'll answer all your questions jitna I can. Next is, how is the working conditions like in Japan? As in, is the technical work too extreme without support, or is it more like documentation plus tech? Like in India these days, companies are giving too much work, that too unrelated to domain. Okay, I think this sounds like a very specific question. So koi bhi team mein, koi bhi company mein, whatever the work is, it can vary a lot. So before joining any company, you need to talk to seniors. You need to talk to people who are already in the company, which again LinkedIn ke through करना is the best way. मतलब it is actually not even just a suggestion. It is like compulsory मेरे हिसाब से कि you definitely need to see कि कुछ है फ्यूचर या नहीं है, एंड फ्यूचर है तो कैसा है. मेरी कंपनी में भी द वर्क रियली डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम. यू रियली कांट डिसाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द जॉब डिस्क्रिप्शन, because same description maybe you'll have like different culture, different expectations, different team manager who decides everything in corporate world. So you need to look into that. You need to see reviews, you need to research opinions, you need to research everything that you can, especially get like insights from within the company. So really dependent on the company. Like I'm sure India में भी ऐसे ही होता है कि they give a lot of work. I understand. Japan में I have not seen that personally. They do not really give that much work in my company, but again really depends on the company. And there's also this black company wali cheese. So this is like really डरावनी चीज़ है. तो they exploit the employees a lot. So those are considered like black companies. उसमें it's like they'll obviously give you a lot of work. They won't give you any holidays, and if you are taking any day off, you'll have to pay the company. You cannot tell anybody about the company. ऐसा भी होता है. And if you're leaving the company, then also the company won't let you leave, or if you manage to leave, so maybe they'll threaten you with stuff, maybe threaten you with lawyer stuff, maybe threaten you कि नहीं कर सकते हो leave. It's like scary. So yeah, again before joining the company you'll have to check कि कोई black company type की तो नहीं है. I don't know how to check that, but वही है कि visibility, if you're seeing कि LinkedIn पे कैसा है वगैरह, and talking to any Indian जो LinkedIn पे मिल जाए, तो that is like the safe thing. But yeah, be aware of these companies. ओके, सो अब क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे बिकॉज थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया है बिकॉज सनसेट होने वाला है. या दिस इज अ गुड वन. डू यू रीड बुक? इफ येस देन नेम अ फ्यू. ऑल्सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ? हाउ डू यू सी लाइफ? व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स? सो ऑनेस्टली लाइक मैंने एक बुक रीड करना शुरू किया है. सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि रीडिंग इज़ ग्रेट, एंड बी इट फिक्शन बी इट नॉन फिक्शन, रीड करना इज़ लाइक रियली अमेजिंग. But I have never been able to read. मतलब I'll just have excuses, कोई reason नहीं है. I even had like library school में. I had library outside of my house, like काफ़ी पास में था, कोई government library थी when I was in like 9th class. But still I just couldn't do it. I just only focus on all the homework जो school में होता था. नॉट अ गुड डिसीजन. बट और घर में भी वो होता है ना, नॉवेल्स का मम्मी बहुत वो करती थी कि नहीं, एकदम नहीं. तो नॉवेल्स भी कभी नहीं पढ़ी, एंड आई ऑलवेज थॉट कि पढ़ना चाहिए, एंड आई वाज लाइक कॉलेज में जाऊँगी तो पढ़ूँगी. बट देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग कॉलेज का स्टफ, तो दैट जस्ट रियली नेवर हैपेंड. एंड ऑब्वियसली देन आई वाज लाइक जब जॉब करूँगी तो करूँगी, देन दैट ऑल्सो नॉट रियली लाइक, वो भी नहीं हुआ. बट नाउ दैट आई हैव सेटल्ड इन अ बिट about job and settling in Japan thoda bahut, now I have started reading books. More than fiction, I think non-fiction books are better, because fiction I guess बचपन में पढ़ना would have been good. It's like watching series, तो leisure में you can do that, और अच्छा है, it's good. Just like it is very equivalent to watching cinema and stuff, तो definitely होना चाहिए वो भी. But I think non-fiction is really helpful in understanding life, which is also kind of similar to the next part, ki perspective about life and seeing life. So I think I have a lot to learn and to read and then realize everything about life. मतलब so naming a few books, तो I guess एक life changing book जो मैंने read करी थी, that was Power of Your Subconscious Mind, and I think it is great. मतलब the whole book is about how you can do anything if you believe in it.
science behind it, and the non-science wala part ki we really don't know how it makes sense, but it happens, and it has a lot of case studies. I think it is good. Like, it is basically not being a complainer, it is being accountable for your actions and for your life. Basically everything that you have is a result of what you do. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो प्रिविलेज होता है दैट इज़ डिफरेंट, लाइक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि फैमिली क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पैसे कितने हैं घर में, आफ्टर एवरीथिंग दैट इज देयर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है दैट यू कुड नॉट चेंज, आफ्टर दैट पॉइंट एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. यू नीड टू रियलाइज कि how much power you have in your hands, something like that. एंड दैट वॉज वन लाइफ चेंजिंग. उसके बाद से आई थॉट कि यार नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए. दैट बुक रियली हेल्प मी वेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, वेन एवर आई वॉज लाइक आई नो आई नीड टू बिलीव इन दिस, एंड आई नो if I do that this will happen. The Sapiens, like I'm reading it right now actually, and I think this is also a great book. इसमें काफ़ी historical information है about how this species evolved, and it also has a relation to the current world ki how does everything work essentially. It has like what are the concept of constitutions, what are the imagined orders that we have, how did patriarchy come into place, like how did patriarchy even begin in the first place. Because nature mein if you see, female species are always dominant, but humans में it is the opposite. So how did that happen? Nature के against ऐसे कैसे हो गया वगैरह. So it is like I've only read like 1/3 of it, and I'm honestly almost a fan. About life, I think the religious books that we have, if you take the culture part out of it, if you take like rituals wala part out of it, then I think those are like great pieces of literature. I have not read those books, but I think I should, and I think everyone should. जो spiritualism होता है और talking about purpose of life, future goals में I think content creation wala is definitely one thing. जो I started recently, and I think it is really good. I just felt like it was a smart decision to have an online presence in this world that we are living in right now. So I guess future goals would be to continue doing this, and maybe hopefully make something big out of it. And साथ में also future goals would be to have more control over my own mind, knowing more about my own mind, knowing more about how the world works, all that. I think that is what would be my future goals. Next is about what something one can do who is not doing anything fruitful in 24 hours for more than a year. He is 28-year male, inspired by you and others like you, but is completely opposite in reality to you, and a lot of laziness. And if you ever feel like giving up, stuck, lazy, feels good about it, remember inspiration, do the same. What he should to act in present towards his goal, avoid being in future in his head. A lot of things here, a lot of things. So see, easiest way to get out of this laziness wala part or get out of procrastination is to decide what do you want in life, what are your goals. So just think about 5 years or 10 years ahead, and imagine what you want to be in those 5 years and 10 years. What is the end point, matlab what do you want after 5 years or 10 years ki kya chahiye. Mostly it is 3. It is health, it is wealth, it is relationships. Think about these 3 aspects. Like if you don't have any goal in mind, so just sit down today, think 10 years, उस point पे what do you want in these 3 categories. And this is mostly everything that you have in life. तो when you do that, you'll see कि यार ये goals चाहिए. Automatically what will happen is you'll think कि यार मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ. But most important is कि यहाँ पे don't hesitate at all. ये goals जो है, you can 10 years में anything and everything can change. तो do not hesitate कि छोटा गोल लिख दो, छोटा सा कुछ लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. Make it something really big. Make it something that you want. That is the motivation that you need. And once you do that, तो गोल लिखने के बाद now step back. तो backward approach होनी चाहिए, एक backtrack वाली approach. Then divide that into years कि if it is 10 years into the future,
So if you're 28, what will you want from life when you're 38? Think about that. And then backtrack from that point कि अगर 10 years में इतना चाहिए तो 5 years में क्या चाहिए, राइट? 5 years में क्या होगा? देन 5 years के बाद डिसाइड कि अब से 2 साल बाद क्या होना चाहिए. देन डिसाइड अब से 1 साल बाद क्या होना चाहिए. एंड देन वो 1 साल का जो गोल है, देन उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो. डिवाइडेड ऑन अ मंथली बेसिस कि इफ नेक्स्ट ईयर व्हेन यू आर 29, उस टाइम पे व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ टू अचीव द 10 years वाला गोल. दैट इज हाउ यू डिजाइन ऑल ऑफ योर लाइफ. एंड what this does is कि you'll realize कि when you break down the goal from next year, फिर you'll feel the urgency कि यार मुझे ये करना है to achieve that. मतलब honestly if you don't want a big goal, that is also completely okay. कोई छोटा गोल रख दो, but have a goal. कुछ एक गोल होना चाहिए. Even if you want कि मुझे कुछ नहीं करना है, I want a life where I have enough money and I can just sit and scroll through YouTube. That is good enough. बस डिसाइड किए व्हाट टाइप ऑफ मनी डू यू वांट, कैसा चाहिए. इफ़ यू वांट लाइक अ जॉब तो कौन सी जॉब चाहिए. इफ़ इट इज़ अ वेरी बेसिक जॉब, मे बी गवर्नमेंट जॉब है. इफ़ यू वांट अ जॉब ऑफ अ क्लर्क तो उसका क्या होगा. फॉर यू टू बी अ क्लर्क इन 10 years, व्हाट डू यू नीड टू डू टू सी दैट फ्यूचर इन 1 year. एंड you'll see कि कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, कौन सी प्रेपरेशन करनी है. सो ऑटोमेटिकली you'll have the steps and then you can start with that. It is your life and वही अफेक्ट होगी. So you'll have to take accountability for that, and if you want to do something, so then you can, right? Hope that makes sense. Next is initial procedures for someone when moving to Japan, like how and which SIM carrier should buy, how to register address, city hall, health insurance, important apps to be installed, okay, stuff like that. All right, so this is a lot of मेहनत. अगर शिफ्ट कर रहा है कोई तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट. काफ़ी सारी मेहनत होगी. एंड स्टार्टिंग विद द सिम पार्ट, मैं जब आई थी मैं एक्चुअली सिम कार्ड नहीं कंसिडर किया था मैंने. आई जस्ट वॉज लाइक जो भी वाईफाई होगा उसी से आई ऑपरेट एंड दैट वर्कड. और बट स्टिल इफ़ यू हैव लाइक कोई भी इंडियन सिम होगी और मे बी उसका इंटरनेशनल पैकेज यू कैन कंपेयर विद एनी सिम जो ट्रैवल वाली सिम्स होती है, राइट? 8 और 10 days वैलिडिटी वाली, वैसा कुछ यू कैन कंसिडर. मोस्टली तो वाईफाई से एंड व्हाट्सएप कॉल से हो जाता है. तो मेरा एक्चुअली इंडियन सिम जो है दैट इज़ नॉट एक्टिव हियर, तो वो बस उसका रिचार्ज होते रहता है, पापा कर देता है सो दैट इट इज़ अलाइव. बट उसका आई डोंट यूज़ दैट एट ऑल. तो मे बी यू वोंट नीड दैट. बट वेन यू आर हियर तो उसके बाद वेन यू सर्च फॉर द अपार्टमेंट जहाँ पे रहने वाले हो, उस अपार्टमेंट के बाद यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू सम स्टोर्स विच आर mostly like electronics wale stores, and they have these tie-ups with SIM card providers and internet providers. So when you get a SIM card plus a Wi-Fi connection, for example, for your apartment, so that opens up a lot of points wala option. So what they do is wo 60,000 70,000 80,000 तक का डिस्काउंट दे देता है फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू बाय. मतलब काफ़ी क्लेवर है. एंड इफ़ यू बाय स्टफ, सो बेसिकली 80,000 90,000 का येन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, एक पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 येन. तो 90,000 येन तुम्हें काइंड ऑफ फ्री में उसका सामान मिल जाएगा, विच इज़ आई थिंक गुड. बट 1-2 साल में दे कवर अप द कॉस्ट बिकॉज सिम का और जो वाईफाई का कॉस्ट होता है. बट स्टिल इट इज़ लाइक अ गुड इंटरेस्टिंग स्कीम that they have. So you should do that. You should go to these stores जैसे Yodobashi, there is Big Camera, there is I guess एक और. तो ये वाले जो stores है, you can go there and tell about इस जो भी कोई भी SIM carrier ले सकते हो जो भी cheap मिले. Mostly तो काम करता है. There is also Wi-Fi. I'm talking about Tokyo यहाँ पे, but बाकी जापान में भी है गवर्नमेंट Wi-Fi वगैरह. सिटी हॉल पे रजिस्टर करने के लिए यू विल हैव टू सर्च लाइक गूगल और ChatGPT यूज़ करके. यू शुड सर्च कि सिटी हॉल कौन सा है, कहाँ पर है, एंड देन यूज़ गूगल मैप्स काम आएगा जो नॉर्मल गूगल मैप्स होता है फॉर दी एप्स. लाइक दैट इज़ दी होली ग्रेल, बहुत यूज़ आएगा. सो गूगल मैप्स डेफिनेटली यूज़ करना है. और
अप्लाई फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ना यार, आई थिंक इफ़ यू आर कमिंग हेयर एज अ स्टूडेंट तो मे बी द यूनिवर्सिटी विल डू फॉर यू. आई एम नॉट श्योर अबाउट स्टूडेंट वाला, बट इफ़ यू आर कमिंग हेयर टू जॉइन अ कंपनी तो द कंपनी विल अप्लाई फॉर इट. सो वो मेरे केस में तो कंपनी ने कर दिया था. तो इफ़ यू हैव एनी HR एनी कॉन्टैक्ट तो उनसे डेफिनेटली शुड टॉक एंड आस्क कि क्या करना चाहिए.